Hello children, how are you? I hope you all are enjoying the grammar concepts that we've been learning. Right. So children, we are going to look at another concept in grammar which is called adjectives. तो बच्चों जैसे कि आपको पता है adjectives को क्या कहते हैं? Describing words. So let's look at this chapter called adjectives. So hello kids. We know that adjectives are the words that describe or modify nouns or pronouns. They tell us what kind of, how many, how much, what color or what size a noun is. Adjectives also tell us whose it is and which it is. तो मतलब adjectives हमें क्या क्या बताते हैं, किस तरह का है, what kind of, okay, कितने हैं, ओके कितना क्वांटिटी है उसका, कलर कौन सा है, साइज क्या है नाउन का, या ओके ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? एडजेक्टिव से, क्योंकि एडजेक्टिव उस चीज़ को, उस नाउन को डिस्क्राइब करते. ओके नाउ in this way adjectives can be classified into the following kinds. Now let's look at the different kinds of adjectives. Okay, so first one, adjectives of quality. Okay, adjectives which tell us what kind, okay, of what kind, किस तरीके का है, okay, जब वो बताते a person or a thing, okay, describe the quality of a person or a thing, okay, those adjectives are called adjectives of quality. So for example, my friend is a gentle boy. कैसे है मेरा दोस्त, कैसे है? Gentle. Okay, the Taj Mahal is a beautiful building. So when you look at Taj Mahal, जब आप ताज महल को देखते हो तो पहले सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, कौन सा वर्ड आता है? Beautiful. Okay, so that is describing that building, okay, that monument, that it is beautiful. Okay, so now be smart and you have to do the exercise. Underline the adjective of quality in these sentences. Okay, so she likes to eat boiled eggs. So यहाँ पे आप question क्या पूछेगी? आप क्वेश्चन पूछोगे what kind of eggs does she like to eat? तो आपको आंसर मिलेगा boiled. So now boiled is your adjective of quality. Clear? Okay, चलो. The roses have a sweet smell. What kind of smell does roses have? They have a sweet smell. तो sweet becomes your adjective of quality. Clear? ऐसे ही जल्दी जल्दी बाकी sentences अपने आप करने. Okay? So now let's move at the next type of adjective, which is called the adjectives of quantity. Okay, adjectives of quantity मतलब quantity का मतलब क्या होता है? Quantity means how much, कितने हैं. Okay, so adjectives which tell us how much of something is meant are called adjectives of quantity. For example, there was no milk in the jug. Okay, तो कितना दूध था? कुछ भी नहीं था. No. Do you have enough time for me? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है? थोड़ा बहुत टाइम है? So that becomes enough time for me. Okay? So these are adjectives of quantity. Okay? तो यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे how much. Clear? Next, adjectives of number. ठीक है? Adjectives which tell us how many, कितने, okay, or which thing or person is meant are called adjectives of number. Okay, they tell us about the number or order of nouns. The nouns का number बताते हैं या order बताते हैं. Those are called adjectives of number. Okay, so for example, there are 20 cows in my farm. How many cows are there in your farm? 20. So 20 becomes the adjective of number. Okay, a few children kept on playing in the rain. तो कितने बच्चे खेल रहे थे? A few. Clear? दीपक sits in the third row in the class. कौन से रो में बैठता है दीपक? He sits in the third. Okay, third row becomes the adjective of number. Clear? Okay, तो बच्चों easy है ना ये? चलो अब हम करते हैं exercise. Okay, so underline the adjectives of quantity and number in the following sentences. Okay, Tagore wrote many plays and stories. So kitne? Many. So many becomes your adjective of
quantity. Okay, so now it's time to do the exercise. So बच्चों, let's look at what the exercise is about. Underline the adjectives of quantity or number in the following sentences. तो बच्चों, when you are attempting this exercise, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि quantity find out करने के लिए आप सवाल पूछोगे how much, ठीक है, और नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप सवाल पूछोगे हाउ मेनी या विच. ओके, तो लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. ओके, फर्स्ट वन, टैगोर रोट मेनी प्लेज एंड स्टोरीज. तो यहाँ पे आप सवाल पूछोगे हाउ मेनी प्लेज डिड टैगोर राइट. तो इसका आंसर आपको मिलेगा मेनी. ओके, तो मेनी मतलब क्या हो जाता है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. ठीक है, He has sufficient money for the fare. तो यहाँ पे सवाल आएगा How much money does he have for the fare? तो आंसर मिलेगा sufficient. तो आपने सवाल क्या पूछा है, How much. How much मतलब आता है quantity. Clear? Okay. The first girl in the second row is a newcomer. Who is a newcomer? Okay. Which girl is a newcomer? ओके, तो आप बोलोगे द फर्स्ट गर्ल. ओके, तो एंड वेयर इज दैट गर्ल सिटिंग, सेकेंड रो. तो आप डिस्क्राइब कर रहे हो फर्स्ट एंड सेकेंड, दीज आर व्हाट, नंबर. क्लियर? तो ये बन जाएंगे आपके एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर. क्लियर? ऐसे ही सवाल पूछो और आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे. क्लियर? Okay, next one. Let's look at the demonstrative adjectives. Okay, finish that exercise without fail, children. Alright, adjectives that modify a noun so that we know which specific person, place or thing is meant are called demonstrative adjectives. तो यहाँ पे आपको demonstrative adjectives, ये तो हमने पहले भी किया है. This, that, these, those, all these are what? These are demonstrative adjectives. तो ये जो demonstrative adjectives होते हैं, ये हमें specific person, place या thing के बारे में बता रहे. Okay, they mean about a specific thing, place or a person. Like, I like these shirts. So, we are talking about specific shirts that we like. हाँ, specific shirts के बारे में बोला जा रहा है कि मुझे ये shirts अच्छे लगते हैं. These. ओके, कैन आई टेक दिस बलून. तो एक स्पेसिफिक बलून के बारे में है, कैन आई टेक दिस बलून. ओके, दोज चेयर्स आर न्यू. आई डू नॉट लाइक सच थिंग्स. लुक एट दैट एरोप्लेन. क्लियर? इजी है ना? ये तो हमने पहले भी किया है, बस हमें नाम नहीं पता था. नाउ वी नो द नेम ऑफ इट एंड द नेम इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. सो नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. Underline the demonstrative adjectives in the following sentences. I like these storybooks. So these. Whose are those shirts? Those. Okay, I hate such people. Such. Clear? अब जल्दी जल्दी बाकी sentences अपने आप कर लेना. Okay? So now, next type of adjective is the interrogative adjectives. Interrogative adjectives मतलब the adjectives that ask us a question. Okay, like adjectives that are used before nouns to ask questions are called interrogative adjectives, such as what, which, where, when, whose, etc. Okay, for example, what color is your car? So what is an interrogative adjective? Which places did you visit in Delhi? Whose book is on the shelf? ठीक है? So these are the words like what, which, whose. These are all interrogative adjectives. Now, possessive adjectives. Possessive मतलब क्या? जो चीज़ किसी को belong करती है. Okay, that is called possessive. So it can either belong to a person or it can belong to you. Okay. Adjectives that show possession or a sense of belonging to a person or thing are called possessive adjectives. ठीक है? Example, this is my house. So my becomes your possessive adjective. That is your school. वो तुम्हारी school है. तो वो school किसको belong करती है? तुम्हें belong करती है. Okay, so that is the place where you go. तो your. These are our books. ये हमारे books है. Those are their dogs.
ओके दिया, ठीक है, ओके इजी है। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं एंड यू हैव टू अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस एंड राइट आई फॉर इंटरोगेटिव एंड पी फॉर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। बहुत आसान है बच्चों, इट इज वेरी इजी एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल कैन डू इट। इज योर टीचर एब्सेंट टुडे? सो यहाँ पे क्या आएगा? Is your teacher absent today? So this becomes an interrogative sentence because it is ending with your question mark. Okay, तो यहाँ पे आएगा is. Clear? Okay. He has completed his homework. Okay, तो यहाँ पे ये क्या आएगा? ये आएगा आपका actually यहाँ पे ये question mark जो डाला है वो गलत डाला है, तो this is he has completed his homework. तो वो आता है, अब उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया है, तो his, okay, his becomes a possessive thing, that homework belong to him which he has done, so it is P. Okay, now which house is yours? तो which ये सवाल आ गया, so that becomes an interrogative adjective. Clear? Now have they learned their lesson? So have, okay, that is like a asking question, so that is why it's an interrogative adjective. Now अभी जल्दी जल्दी से बाकी sentences अपने आप clear करने, बहुत आसान है, थोड़े से ही बच गए. Okay, now next one, complete the following sentences with the type of adjectives indicated in the brackets. अब आपको ब्रैकेट में एडजेक्टिव का टाइप लिखा गया है, आपको उसके हिसाब से उसमें वर्ड्स डालने. We need a dash milk to prepare this dish. So यहाँ पे हम लिखेंगे we need a liter of milk to prepare this dish. Okay, तो क्वांटिटी बता रहे हैं हम लोग, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे नहीं, हम लीटर ऑफ मिल्क बोल सकते हैं यहाँ पे. ओके, when will dash dresses be ready? तो यहाँ पे possessive adjective है, so when will my dresses be ready? Okay, clear? Interrogative adjective, dash book was stolen by this student. Okay, whose book was stolen by this student? Clear? So ऐसे ही आपको बाकी sentences करने हैं. Now look at the type of adjective and then quickly fill in the blanks and complete this. I hope children this chapter was easy for you to understand, and I'm sure that you can easily, okay, without any doubt complete this exercise. But children, हमेशा याद रखना है, जब भी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करते हैं पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसको फिर से समझेंगे और फिर एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट दिस मैजिक क्वेश्चंस, ओके, दैट यू हैव टू रिप्लाई टू व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ एडजेक्टिव. क्लियर? ओके चिल्ड्रन.